Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect. In the series of People's Health It Matters, today we have Dr. Meely Panda, who is Assistant Professor in Department of Community Medicine, Community and Family Medicine, AIIMS, Bibinagar, Hyderabad. She has also 10 years of experience. So today we will talk about internet safety and media literacy with Dr. Meely Panda. A very warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. Thank you, Dr. Ritu, for having me. So, without wasting any more time, ma'am, I just wanted to ask you my first question: that what is internet safety and what are the nature of threats? Uh, yes, hello Ritu once again. Based on today's topic, internet safety and media literacy, the first question, as obvious, is what is internet safety and what are the threats we can encounter? Before that, I would like to add certain things that the world today is entirely in our fingertips. Whatever we want, wherever we want, we cannot do without searching for data online, and therefore we cannot say that we'll do without this part. We have to be a part of the internet, you can say, fraternity, and you'll have to know how to safely do it. So it has to be a sort of, you can say, healthy skepticism. So based on this, I'll say internet safety is when you are aware that what are the threats you might encounter and how you can exactly come out of it, or how you can keep yourself safe from it. That becomes the spectrum of internet threat and internet safety. Coming to the next part, that what are the threats we can receive. There are of many types, but for medical fraternity, I'll say they are typically those things which we ask our adolescent or our elderly age group, or even adults. While we serve ourselves, we also encounter many such threats. So we'll go age wise, and we'll see that most commonly it is the adolescent group which we are worried now more, because they are in a phase of transition. They are in a phase of building up their own personality, their behavior. They are in a phase where they are less ready to accept that something wrong is happening or yet to happen to me. So it becomes very difficult for a doctor or say parent to instill in them the values that you have to be safe on internet and you have to be surfing it, yet be cautious. So we'll deal with it first, and the few terms and conditions which we'll go through is the cyberbullying. We have heard about it, everything, and there is a list of it when we go to the cyber .gov.in. They are government sites which keep on updating us about the types of frauds which can come up. So the terms are, see, we have cyberbullying, we have cyber threats, we have cyber dating, we have phishing, we have spoofing, we have things called as impersonation, we have things called as grooming. So more or less these are terms which might sound not familiar to us. लेकिन क्या है, the basic behind all of them is they try to cheat us. They try to take us into things which might land us in trouble, and they show us something and they are something actually. है ना, हमें वो चीट करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं या फिर हम सेफ हैं, सो दैट जैसे ही हम जाते हैं वहां पे दे टेक अस इनटू अ लैंड वेयर वी गेट ट्रैप्ड, एंड वंस वी गेट ट्रैप्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. Most of the time people say that चलो ठीक है छोड़ दो, if it's not that serious. Most of the time when they actually fall a prey to it, they cannot come out of it logically, and most of the time they put up complaints if they know how to go stepwise about it. So ये था mostly adolescent. Elderly की बात करें, so they are different. उनको क्या करते हैं, sites they try to cheat them in the name of spiritual journeys हो, या फिर investment plans हो, या फिर to multiply, या फिर romance dating sites. So these are the typical sites जो elderly को हम trap कर सकते हैं, and they are there. उनको फूल बनाना इज वेरी इजी इन नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका हम डबल कर देंगे पैसा, ओके, या फिर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाएंगे, आप वहां पे ये मिलेगा वो मिलेगा इतने कम टाइम में. सो दीज आर टिपिकल द एल्डरली साइट्स विच दे फॉल प्रे टू. एंड अडल्ट्स की बात करें तो वी हैव ransomwares, जहाँ पे दे से दैट वंस वी गेट ट्रैप, दे से दैट इफ यू डू नॉट गिव अस so and so, will not allow you to have the access to your files. So these are typical things which happen, and typical terms. अगर आपको किसी को भी ज्यादा जानना है टर्म के बारे में, along with the definitions and all, explanation and all, we can very well go to the nationalcyber.gov.in, जो हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का ही साइबर पोर्टल है, एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग अस एवरी डे. नए नए टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आते रहते हैं, तो उनका काम है कि हमें वो अपडेट करते रहें.
along with the older ones which are there, they also keep us updating कि नए नए threats क्या है. And along with that, they also help us in reporting. Reporting means you can complain. So this is the brief. We'll proceed further. Yeah. और अभी तो मैम बहुत ज़्यादा सुसाइड के भी आ रहे हैं ना कि इंटरनेट फ्रॉड की वजह से वो फैमिली ने सुसाइड कर लिया, बहुत ज़्यादा Exactly. ऐसा। हुँ, तो यही तो हम बात कर रहे थे तो कि once they fall a trap to it, and हुँ, if they do not know how to come out of it, and if they do not know that they can share it with their parents who can help them out of it, they'll definitely have no other option. उनको मोस्टली स्पेसिफिकली adolescents, उनको लगेगा हमने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है and there is no other way out. The matter of reputation comes in. The typical term grooming अगर आपने सुना होगा, what they do is they try to typically attack the vulnerable girls or say boys, and they try to groom them means उनको बातों से बहला फुसला के they try to tell them कि life is this, यहाँ पे ये है, वहाँ पे हो वो है. And these students, because these adolescents, because they have this मैंने बताया कि they have this reliability, or they have this tendency of thinking that अभी हम adolescent है, we have our own individuality, personality, parents आर नॉट ऑलवेज राइट, तो उनका वो चलते रहता है फेज. उसी टाइम को वो टारगेट करके दे पिक अप दीज वल्नरेबल किड्स एंड दे ट्राई टू ग्रूम देम सो दैट बाद में चल के दे कैन यूज देम एज सेक्सुअल इमेजेस. उनको कुछ भी उनका एक वीक पॉइंट ट्रैप करके दे ट्राई टू ट्रैप देम एंड दे ट्राई टू, मतलब ये वाला हो जाता है, एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, ड्रग्स हाँ। ट्रैफिकिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाता है. सो द पुअर पर्सन हु इज अ प्रे टू इट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है देन टू कमिट सच हीनियस थिंग्स. सो दिस इज मैम, इट. एक मीडिया लिटरेसी वर्ड आता है ना, ये इंटरनेट सेफ्टी की जब भी हम बात करते हैं तो एक मीडिया लिटरेसी भी वर्ड ज़रूर उसमें इंक्लूड होता है, प्लीज़ इसके बारे में इलैबोरेट करेंगे? Internet safety and media literacy, they go simultaneously, or we can say parallel, because it becomes very important for us to know what is media is not only, let me say, it's not only the newspaper, the Facebook, or all those things which we go through. Okay, along with that there is much more to it. So it becomes very important for us to know that how to access media. ओके, एक्सेस करने के बाद हम उसको एनालाइज करें एंड उसके ऊपर एक्शन ले एंड रिफ्लेक्ट बैक करें. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. मान लो कि कोई न्यूज वाले या फिर कोई इंस्टाग्राम में, ट्विटर में कुछ एक न्यूज आता है, कुछ एक कॉलम आता है. सो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी कैन एक्सेस इट. ओके, यू कैन नॉट से दैट नहीं हमें तो वो करना ही नहीं है, हम उससे दूर रहेंगे. ये भी होता है ना कि हम अपने बच्चों को दूर रखेंगे ताकि वो एकदम उसको पता ही ना चले क्या है एंड उसका फुल स्टॉप हो जाए. बट व्हाट मीडिया लिटरेसी सेज दिस, यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट, लेकिन केयरफुली एक्सेस करो, उसको एनालाइज करो. जो उसने दे दिया दैट इज नॉट ऑलवेज राइट. किसी का क्या इंटेंशन है, किसने किस हिसाब से उसको परसेप्शन से डाला है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. You have to be able to having that thought process that you can also think what it is. You can analyze exactly. आपका खुद का उतना परसेप्शन या फिर थिंकिंग कैपेसिटी होना चाहिए. आप एनालाइज करो, रिफ्लेक्ट बैक करो कि हाउ ट्रू और हाउ अनट्रू, हाउ रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक इट कैन बी, एंड देन टेक एक्शन इन द सेंस दैट आप खुद कुछ चाहो तो एक कॉलम लिख के जैसे वहां पे डाल सको. That capability should also be there with you. So these four things together they become a part of media literacy. Very important, because अगर आप ये नहीं जानते होगे, you will not know how to surf internet, and आपके साथ कुछ हो गया, then you will not know how to come out of it. You'll always be in a sense that okay, या तो आप डर के रहोगे कि नहीं ये बहुत डेंजरस है, इसमें नहीं जाना है, या फिर अगर आप वैसे एकदम खुला छूट मिल जाता है तो आप घुसोगे and you'll get trapped. So you should know how to go into it and how carefully to go into it, instead of saying that I'll stop not going there. So this is where media literacy comes. ओके, तो मैम इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका होगा? या प्रिवेंशन का एस्पेक्ट जो है, दे आर न्यूमरस. हमारे रीजन ज्योग्राफी के ऊपर बेस करता है, एजुकेटेड है नहीं है उस पर बेस करता है. अगर एजुकेटेड मास है, अगर अर्बन है, या फिर इफ यू आर नॉलेजेबल, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू द साइट नेशनल, मैंने अभी बताया था थोड़े टाइम पहले, cyber.gov.in, वो इंडिया का ही साइट है. ओके, इंडिया ने खोला है सो दैट पीपल कैन गो देयर एंड रिपोर्ट देयर कंप्लेन. Okay, they can file it. So there are two things over there. Either you know what are the terms, what are the latest threats that are coming up, or you report it. And आप anonymous without disclosing your name भी आप डाल सकते हो वहाँ पे, report कर सकते हो what is wrong, what has happened wrong to you, or what you have seen happening wrong to someone else.
ये आप कर सकते हो। एंड थोड़ा सा डिटेल्स आपसे मांगेंगे, कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप दे सकते हो। एंड दे विल ट्राई टू resort to it, they will try to solve it. So this is there. And agar aap you are not that educated enough to be going there and actually filing or a complaint, or you're scared that somebody might know my identity, जैसे मैंने बताया, you don't need to reveal your identity. But agar if you are scared enough, you can also file the complaint in your nearest local police station. Okay, that is also there. But in that case also you will have to go there and you have to, show your identity. So these are the two options which are there. Other than that, we have field offices. जगह जगह पे उन्होंने साइबर क्राइम वालों ने फील्ड ऑफिसेस लगा रखा है, उनके फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, आप उनके साथ भी कांटेक्ट में रह सकते हो। इन सबके कांटेक्ट नंबर्स वहीं gov.in उनकी साइट्स में मिल जाएंगे आपको, कि आपके लोकेलिटी के नियरेस्ट फील्ड ऑफिस कहाँ पे है। यू कैन गो देयर, यू कैन ऑल्सो फाइल। मोस्ट कॉमनली रिपोर्ट्स होते हैं अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड्स, कि पैसे मेरे चले गए, ऑल दीज थिंग्स, रैंसमवेयर्स, एंड अबाउट दिस इम्पर्सनेशन, या फिर प्राइमिंग, या फिर सेक्सटिंग, सेक्सटॉर्शन, ये वाली जो चीज़ है ना, वो कम रिपोर्ट होते हैं। इट हैज़ बीन सीन। बट व्हेन यू ट्राई टू मेक पीपल अवेयर दैट नो, यू हैव टू बी रिपोर्टिंग, बिकॉज आप रिपोर्ट करने से आप तो सेफ होते ही हो, आपके अलावा देर आर ऑल्सो अदर पीपल जो लोग सेव हो जाते हैं। ठीक है, सो इट बिकम्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू रिपोर्ट द पीपल, हमारे लिए भी और हमारे सोसाइटी के लिए भी, इफ वी कैन बी ऑफ हेल्प टू सम पीपल। सो दिस इज देयर। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि हम लोग के ज़रूर काम आएगी और हेल्पफुल होगी हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु, थैंक यू ऑल।